So good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're gonna continue our sessions on financial modeling. Okay, so in the previous session, we started to create the financial model of Tata Motors, and we completed the profit and loss statement or the income statement, and we started with a balance sheet, which is also called the position statement. And we tried to analyze it, and like we had the data for 4 years, that is from 17 to 20, and then we tried to calculate the percentage change in these returns and ultimately forecast the future as well. Okay, so by forecasting the future we had the data, and like certainly like in this column we had taken the average, and here we had taken the future forecast. So I'll just mention here as average, and with all this average estimate, like we were clear that we got the future values and our future values were coming correct, right? Estimated value. Okay, let's try to see the same thing for the other years as well, or for the other items. See, when we take our total current liabilities, it predicts the total current liabilities from 25810 to 27503. That is, earlier it was like 25,810. In 2022, on the basis of our estimation, it came out to be 27,503. So let's see here that is it actually 27,503 our total current liabilities. From 18,000, just a second, total current liabilities from 25 to 27. Okay, to go down. From 25 to 27, यहाँ पे it is saying as 26. It means we are overestimating, but we are almost near. ठीक है, कैलकुलेशन जो हम जिस मेथड से कर रहे हैं, we are almost near. And आज तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा. यहाँ पे 26,251 बोल रहा है, 26,251, यहाँ पे 27,503. 26,251, almost like 1,200 crores का difference. It is saying, but almost our estimate, because these are just the projections. It means we are doing the best estimate by taking the average of it. Okay, so we can do one more thing. Let's apply this rate. नहीं, अगर हम ये rate apply करेंगे तो फिर और भी ज़्यादा आएगा. So if you have the following data everywhere ना, अगर सारी तुम्हें like values दी हुई हैं, and on the basis of that you calculate the average, use the last one only. But like in this case we had no data, तो अगर हम तीनों की एवरेज लेंगे तो यही लाइक डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. तो इन दिस केस जो 1.97 वाज नॉट वर्किंग. Okay, your 5.9 was working because that was the only value that we had. Okay, similarly let's try to do it for the total capital and liabilities. देखते हैं हमारा 62 से 63,881 तक पहुंच रहा है या नहीं. टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज 65 का एस्टिमेट बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाइक हम कम एस्टिमेट कर रहे हैं. सो सी दीज एस्टिमेशंस कैन डिफर. हमारा एक 2000 से एस्टिमेट कर रहा है डिफर, ऑलमोस्ट 2000 वी कैन से. ठीक है, बिकॉज हियर वी टुक लाइक दिस एवरेज 2.06. अगर मान लो कि हम लास्ट ईयर का लेते हैं एवरेज, लेट्स सी लाइक इफ वी टेक इट एज 2.7, देन क्या वैल्यू आती है दिस में into, because these are just the ways you can predict. So let's see कि accurate value ज़्यादा किससे आती है. 1 plus last year का जो percentage change लिया है हमने, divided by 100 and closing this 64. We are almost near, बिल्कुल near आ गए. ठीक है, तो शायद कंपनी को लग रहा है कि लास्ट ईयर के रेट पे वो बढ़ जाएगा. नाउ इट इज कम्प्लीटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर कि वो लेगा एवरेज या लास्ट ईयर. अगर उसको लग रहा है कि टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड इज मोर श्योर दैट मोर देन 50% श्योर, ठीक है, कि ज्यादा ग्रोथ आएगी, देन ही कैन टेक दिस लास्ट वन. अगर उसे लगा है कि एवरेज ही चलेगा एंड इज नॉट श्योर कितना होगा, देन ही कैन टेक द एवरेज. बट अगर कुछ और भी फैक्टर्स हैं विच आर इफेक्टिंग द कंपनी, देन ही कैन टेक अ हायर रिटर्न एज वेल. तो इन दैट केस ही माइट हैव, शायद उसको लगा हो कि द कंपनी माइट ग्रो एट 2.9% और 3% इंस्टेड ऑफ 2.7%, because other factors might be contributing as well. क्या पता कि कंपनी की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं एंड कंपनी क्या पता कि कैपिटल रेज कर रही है, लाइक मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी हो सकता है, बिकॉज दिस कंपनी टाटा मोटर्स इज गोइंग इनटू द सेगमेंट ऑफ ईवी एंड ईवी सेगमेंट में जा रही है, तो मे बी द कंपनी वुड बी डूइंग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. ओके,
Let's do it for total fixed assets also. 29 से हमारा 30 बढ़ रहे हैं या नहीं? Total fixed assets, let's see. 29 से 30, almost we are equivalent, almost. हम सही जा रहे हैं. यहाँ पे हमने लाइक 2.0 का रेट लिया था. देखो अब अगर हम यहाँ पे 3.9 का लेते हैं तो हमारा 30 से भी आ गया था, राइट? सो इन दिस केस इट माइट हैपन the financial analyst is thinking the growth will be on average and बहुत ज़्यादा fixed assets नहीं आएंगे. So that the person is thinking. Let's take our total current assets. My total current assets जो last हैं, let's see have they like increased coming from 13,563 से 13,943. 13 सेम है, ठीक है, बस हंड्रेड्स में चेंज हुआ है, मतलब कि 400 से बढ़ रहे हैं. 13,563 to 13,943. यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन हो गया, 15,854 आ रहा है. लेट्स सी, दो वी आर स्टिल नियर, तो उसमें लेते हैं कि रेट यहाँ पे हमने लिया था 2.76 एंड अगर हम 2.5 ले रहे हैं तो मतलब कि और भी कम होगा, ठीक है. सो माइट भी उनको लगता है कि द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी लाइक वुड इंक्रीज एंड करंट एसेट्स पे लाइक दे वुड बी डूइंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इस चक्कर में उनके लाइक करंट एसेट्स बढ़ गए. बट वन थिंग दैट यू नीड टू नो, इफ द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू करंट एसेट्स, like more into current assets, the liquidity of the company like would increase, the short term liquidity I'm talking about. But the overall return on investments might decrease because in order to increase the profitability of the company invest in long term assets, because long term assets से तुम्हारा like profit बनता है. तो हो सकता है कि if the company is investing like more into current assets, the profitability of the company decreases. And that is why in P&L statement also we can see the company का जो negative profit है या जो company के losses हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. So this is how we can link all with our financial concepts. ठीक है, go back to sheet number 4 and total assets कितने से 62 से हमारे क्या 63 हो रहे हैं या ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं? यहाँ भी 65 बोल रहे हैं, राइट? हमने यहाँ 2.06 लिया था, हम एक बार 2.7 भी लेके देखते हैं on this last estimate. 1 plus 2.7 divided by 100, closing it. 64, we are almost near. तो यहाँ पे शायद मैनेजर को लग रहा है कि टोटल एसेट्स कंपनी के बढ़ने हैं लाइक मोर देन एवरेज अमाउंट्स. और अगर हम ये लें, इंस्टेड ऑफ 2.7 वी टेक 2.8, ये वाला, ये इससे भी ज्यादा है, एंड क्लोज द ब्रैकेट. Like we are getting like near towards 65,000. That is completely upon the discretion of the manager कि manager को क्या लग रहा है. Okay, so we will just remove this as well. And now we would do the common sizing. Okay, so how do we do common sizing? We take each a particular item in the numerator and divide it by the base. And base एक नहीं रहेगा. For the items of this share capital reserves and surplus, your base would be total shareholders funds. For all the liabilities, your base would be total capital and liabilities, and for all the assets, your base would be total assets. That is why I highlighted these in the beginning only. Okay, now let's calculate, and this is called your common size analysis or the vertical analysis. Okay, so now let's try to estimate is equal to this divided by this. Okay, and let's drag it to the right hand side for the next 3 years as well. And let's check key, is it being divided by the appropriate numbers, right? But don't just click here and drag it whole, because here we just have to take till shareholder funds only. Okay, अगर हम ड्रैग करेंगे पूरा तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी चला जाएगा, बट उनका बेस इज डिफरेंट. Again this div has come. Now how to remove this div here? Using if error. If error, opening bracket, वैल्यू है तो ये, वैल्यू नहीं है तो 0, closing the bracket. Dragging it towards the right hand side. मैं यहाँ लगानी चाहिए थी ऊपर वैल्यू. If error.
वैल्यू नहीं है तो 0। Okay, maybe like we have applied this formula नीचे, so that is why like it is not taking it. So इस चीज का ध्यान रखना, पहले like ऊपर formula apply करना. That is one thing should be clear to you. ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए I'll just write down as this value, closing the bracket. Okay, यही सेम चीज you can drag below. ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम जाओगे तो देखना कि वैल्यू कुछ और आ रही है, मतलब हमने मिस्टेक करी है. पहले हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, हम div पे ले आते हैं, इफ एरर हम लगाते रहेंगे बाद में. ठीक है, या जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, दिस वैल्यू इज नॉट टेकिंग द टोटल ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स, वो इसके नीचे की वैल्यू ले रहा है. ओके, देन हाउ टू डू इट, यू हैव टू फिक्स द सेल ऊपर ही में, ये B10 फिक्स कर दो बाय यूजिंग अ डॉलर साइन. सेम डू इट फॉर दिस. एक से काम नहीं चलेगा, सबको डॉलर साइन से यू हैव टू फिक्स. Yeah, now after fixing it, drag it down. अब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ओके, मैं थोड़ा डबल क्लिक बिकॉज वैल्यूज वहीं जाएंगी. एंड अब तुम देखोगे इट इज टेकिंग द बेस ऑनली, जो हमारी ठीक वाली वैल्यू. ओके, द सेम प्रोसेस वी हैव टू कैरी आउट फॉर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये लाइबिलिटीज है, नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो हियर वी कैन डू दिस डिवाइडेड बाय योर टोटल. अरे this value. Okay, again what we can do, we can fix this cell, I can drag it this side. ड्रैग करेंगे हमारा B सेल ही फिक्स होगा, राइट, बट हमें इसको C करना है, ये चेंजेस करने पड़ेंगे. Again drag it down onto the liabilities. देखो, ठीक है, सही कर रहे हैं, बिकॉज 1 by 1 तो 1 ही होगा. देखो, हमें पूरा लाइक डबल क्लिक नहीं करना है. This is common sizing. Same we have to do for the assets as well. Assets की वैल्यू लेके चलते हैं, this we have this value divided by your total assets. Into 100 भी कर सकते हो for percentage change. That is completely all upon you. Same thing you can do, drag this. यहाँ पे cells change कर दो. यहाँ पे तुम्हारा C है, यहाँ पे you have D, and यहाँ पे you have E. You can drag it down because नीचे कुछ वैल्यू है ही नहीं, वो सारे परसेंटेजेस आ जाएंगे by your total. So this is how we have completed, and इसमें like we can also predict कि परसेंटेज टू एसेट्स या परसेंटेज टू लाइबिलिटीज बड़ा है या कम हुआ, या परसेंटेज टू टोटल शेयर होल्डर फंड्स बड़ा है कम हुआ. यहाँ पे वी कैन से परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स बड़ा है, लाइक कुछ आइटम्स में, ऑलमोस्ट सब में बड़ा है. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटीज भी बड़ा है, ऑलमोस्ट सब में बड़ा है. एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स भी बड़ा है, ऑलमोस्ट सब में. द कंपनी इज डूइंग गुड वी कैन से. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे,
and I'll see you in the next session. And the next session we'll talk about the cash flow statement. Okay, that was all for today. See you in the next session. Thank you.